हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमनदीप कौर। वेलकम बैक टू द चैनल अमन सिद्धू मैथ्स। और हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स विद एग्जांपल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, एज द नेम suggests, a matrix having only one row. A matrix having only one row. वो मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो हो और कॉलम जो है वो जितने मर्जी हो सकते हैं। दैट मीन्स रो एक होनी चाहिए, उसके ऊपर कंडीशन है, और कॉलम्स का नंबर वेरी कर सकता है 2, 3, 4। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव एनी मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म वी हैव -3, 4 and 5. This matrix is of order 1 into 3. Here number of rows is 1 and columns are 3. This is column 1, column 2 and column 3, and this is row 1 only. Okay, next example we have any arbitrary constants a and b. This matrix is of order 1 into 2, 1 row 2 columns. Another example we take 1, 4, 7, 9. This matrix is of order 1 into 4, 1 row and 4 columns. That means we have only condition on the rows. Rows जो है वो हमारे पास एक होनी चाहिए, लेकिन कॉलम जो है वो जितने भी मर्जी हो सकते हैं, रो 1 होनी चाहिए। Okay, now move to the column matrix. Next is column matrix. As the name suggests, a matrix having only one column. A matrix having only one column, that means जो भी column matrix है उसमें column एक ही होएगा और जो rows है उनकी counting 1 से ज़्यादा होएगी। 1 भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा होएगी। That means if we have any example of the form, column matrix are like this is column matrix. Here we have one column but we have 2 rows. This is row 1 and this is row 2 and column is 1. So this is of order 2 into 1. If we take another example, if we have 7, 9, -1. This matrix has column 1. यहाँ पे कॉलम एक ही है और रोज कितनी है, ये रो 1 है, ये 2 एंड दिस इज रो 3. दैट मीन्स ये मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर 3 into 1 होएगा। बेसिकली जो कॉलम मैट्रिक्स है वो n into 1 ऑर्डर की होएंगी। ठीक है, n जो है वो कोई कांस्टेंट है, दैट मीन्स n नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होएगा, और 1 जो है वो कॉलम है। ठीक है, तो जो कॉलम मैट्रिक्स है वो इस ऑर्डर की फॉर्म की होंगी। ओके, नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। दैट मीन्स वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होएगी जिसके कॉलम्स और रोज का नंबर सेम होएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 3, 1, 5, 9. This matrix is of order 2 into 2. In this matrix number of rows कितना है 2 and number of columns कितना है 2. That means दोनों equal हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या आएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। Now move to the next example. If we have a matrix only with single element 7. This matrix is of order 1 into 1. यही column 1 है और यही row 1 है। That means this matrix is also a square matrix, because in this matrix number of rows is equals to number of columns. Now move to another example. This is another example of square matrix of order 3 into 3. In this matrix we have 3 columns and 3 rows. That means this matrix is of order 3, so this is also a square matrix. There is one remark, that is, if I am saying a square matrix of order n, a square matrix of order n, तो इसका मीनिंग क्या होएगा कि जो मैट्रिक्स A है, कोई भी मैट्रिक्स है A, उसका ऑर्डर n क्रॉस n है। दैट मीन्स जो मैट्रिक्स का रोज और कॉलम का नंबर है वो
n होएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम सेम होते हैं, सो n क्रॉस n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। अगर मैं बोलूं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 2। मैट्रिक्स जो है उसकी 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगी। नेक्स्ट वी हैव रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, वो डिफरेंट है, वो मैट्रिक्स क्या आएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल करते हैं इसकी। इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म 1 2 3 4 5 and 6, दिस मैट्रिक्स हैज 3 columns, column 1, column 2 and column 3, and rows are row 1 and row 2. That means this matrix is of order 2 cross 3, 2 rows and 3 columns. This is a rectangular matrix because here number of rows are different from number of columns. We have another example. If we have 1 2 3 elements and this is a matrix, as we know this is a row matrix and this is also a rectangular matrix because order of this matrix is 1 cross 3. That means इसमें एक रो है, 3 कॉलम्स हैं, तो रो number of rows are different from number of columns, so this given matrix is also a rectangular matrix. Next we have 1 5 minus 2 8 7 3 5 9 10 9 2 21. This is a matrix of order 3 cross 4 because here this is column 1, column 2, column 3, column 4 and this is row 1, row 2 and row 3. Here number of rows and number of columns are different. Number of rows are 3 and number of columns are 4. So this matrix is also an example of rectangular matrix. I hope you like the video. Like, comment, share and also subscribe to channel, and thank you for watching the video.